Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Varun. Keep the charts clean. We'll start it in few minutes. किसी को भी कोई डाउट है पूछ लेना. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में सरप्लस मार्क करना इज नॉट राइट. कन्वर्जन होने दो. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है. लास्ट सर्विस ये दिखने दो पहला. उसके बाद इंटैक्ट रेंज रिजेक्शन. यहाँ से 60% अलोकेशन में देखना. 80% अलोकेशन इस पॉइंट ऑफ रेंज से देखना. सुबह सुबह 90 पिप्स रनिंग है सर. 150% रिजेक्शन से लिया था. ग्रेट. सेम हियर सर. 70 पिप्स रनिंग. आज के दिन में एक चीज नोटिस करना. राइट. All the rejections are showcased in perspective of New York PM session was in 150% range. 150, 150, 150, 150, 150. So आज का major rejection points होंगे 150% of the supply or the minimality. अगर M2 फॉर्म होता है तभी 200% तक का होल्डिंग्स रहेगी. अगर आईडी ट्रेड में हो तो 150% का अलोकेशंस लेके चलना. इफ इट गोज डायरेक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट शुड वी डू. जो नीचे से चल रहा है वो रहेगा. ओके. एड ऑन नहीं देखेंगे. एक्सपेक्टेड मूवमेंट शुड बी फ्रॉम 38. 38 में एड ऑन देख सकते हैं. ओके. जो यूट्यूब में देख रहे हैं किसी को भी कोई डाउट्स है. एक घंटे का कैंडल विल बी क्लोजिंग इन नेक्स्ट 8 मिनट्स. सॉरी 6 मिनट्स. नेक्स्ट 1 आवर का कैंडल डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए. रिजेक्शन लेना चाहिए. इंटैक्ट होना चाहिए. उसके बाद तब जाके आज का दिन में न्यूयॉर्क सेशन तक वन डायरेक्शनल मूवमेंट मिल सकती है. ओके. अगर वॉल्यूम नोटिस कर रहे हो कल के दिन का जो भी ग्रुप्स में आप लोगों को मैसेजेस दिखा है वो भी दिखा देता हूँ. व्हाट डू यू नोटिस. फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट कल के दिन में यहाँ पे था. व्हाई. व्हाई बिकॉज वी हैड ए हाई वॉल्यूम हाई कैलिब्रेशन पॉइंट. जो कि हाई कैलिब्रेशन पॉइंट ऑफ रेंज यहाँ पे थी. सो हेंस वी हैड लुक्ड फॉर एन ओवरऑल एग्जिट. सेकेंड शॉर्ट का ट्रेड का एग्जिट क्यों बोला था. बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम. राइट.
एंड हाई वॉल्यूम कैलिब्रेशन के साथ हाई कैलिब्रेशन पॉइंट। जब दोनों कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ एक्शन में मिलते हैं, द नेक्स्ट substantial movement will always be taken under the consideration of previous. So लॉन्ग, कल का दो ट्रेड थी, आज के दिन में फर्स्ट ट्रेड जो हम लॉन्ग किया है उसका एड ऑन पॉइंट हम तभी देखेंगे जब एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिलता है विद एन इंटैक्ट, तब तक नहीं। ओके, अगर वो इंटरेक्शन हमें मिलती है एट द राइट पॉइंट ऑफ एक्शन, वी विल डेफिनेटली लुक फॉर एन एग्जीक्यूशन। एक चीज बताओ अभी सब लोग, अगर इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमारे पास कोई भी रिजेक्शन नहीं है 150 से या 200% से, तो व्हाट शुड बी द मेजर प्लान ऑफ एक्शन? फर्स्ट, लिक्विडिटी ग्रैब, राइट? मतलब मार्केट यहाँ पे सबको ट्रैप कर रहा है, राइट? सो उस ट्रैप के साथ व्हाट वी कैन लुक फॉर, वन मोर सेटअप क्रिएशन। ये ग्रीन कैंडल जो है ना, दैट विल कन्वर्ट इनटू रेड एज पर द एनालिसिस। वेरी रेयर सिनेरियो में ये डायरेक्टली यहाँ तक जाके उसके बाद यहाँ तक आएगा। इट्स अ वेरी रेयर सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमें एक ही चीज करना होगा, अगर कैंडल सस्टेन होती है इसके ऊपर, देन वी विल लुक फॉर सेकेंड सर्विंग। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सर्विंग ये था जो हमने यहाँ पे मैप किया। व्हाट इज द सेकेंड सर्विंग? ये होगी सेकेंड सर्विंग। ठीक है, नहीं नहीं अंबिका, ट्रेड में रो, एड ऑन मत देखना इज व्हाट आई एम सेइंग एट द करेंट स्टेज। एड ऑन तभी देखेंगे जब एक राइट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होते हुए दिखेगी हमें। ठीक है, उससे पहले no action plans will be taken under the consideration to the previous। आने दो, अगर ये कैंडल नोटिस कर रहे हो ना, ये करंट कैंडल, इसको 5 मिनट में जाके देखो, इट विल बी वन रेड कैंडल एंड वन ग्रीन कैंडल। मतलब यहाँ पे उस पुल बैक में सब लोग लॉन्ग की तरफ बैठे होंगे। जब इस पुल बैक में सब लोग लॉन्ग की तरफ बैठे होंगे तो डेफिनेटली उनका भी एसएल लेगा, जो इस कैंडल में बैठे हैं, राइट, उनका भी एसएल लेगा। उसके बाद ही कंटिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट दिखने को मिलेगी। जो जो यहाँ से बैठा है, नॉट एन इशू, राइट? ब्रेक इवन रेंज तक आके जाएगा वापस। एक बार दिखा दो 5 मिनट्स, दिस वन, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जो जो बैठा है उनको भी निकालेगा। वेरी रेयर सिनेरियो में उनको वो पोजीशन होल्ड करने देगी। ठीक है, नहीं बीटीसी में कुछ करने के लिए है ही नहीं ना, वो एक रेंज में है।
जब तक प्रॉपर त्रिशूल या थ्री विंग सेटअप फॉर्मेशन नहीं दिखता है, होल्डिंग ट्रेड्स में हम नहीं जाएंगे। Am I clear? पूरा लेवल को डेवलप होने का वेट करो, डायरेक्ट एंट्री मत दे। गुड जॉब स्मिता मैम, गुड जॉब अरुंधति मैम। कॉशियसली अनकॉन्शियस ट्रेड्स मत दो सुबह सुबह, वो न्यूयॉर्क सेशन में करो। हाँ, बिकॉज जो भी प्रॉफिट्स रहता है उसके साथ खेलोगे ना न्यूयॉर्क सेशन में, कैपिटल से नहीं। सो दैट्स टोटली फाइन। First two trades, full focus trades, which converts into profits. Then bit of high risk trades to compound the profits. Simple rule. विक क्रिएट नहीं हुआ है, क्रिएट होने दो। क्या सब अब भी मतलब। Good morning, Eric. How are you doing? How is the learning going on?
क्या कर रहे हो यार फैजा? I am learning a lot from this, but I have two questions. Yes, please do ask Eric. Not an issue. How did you know that they will trap the retailers? That's the mi- that's the mindset of the bigger whales which comes into the play. Good morning, Ashu. उसका एसएल रेंज देखो रिटेलर्स पर्सपेक्टिव में वो फॉलो करते हैं 1 पिप या 2 पिप which is equivalent to sorry 1 point या 2 point which is equivalent to 20 pips, right? बिना सेटअप का एंट्री करता है फोमो में. In which scenario is supply converted to demand or demand converted into supply? The scenarios are taken under consideration whenever you find the break of structure or change of character. Sorry, change of characters. Break of structure is in the same direction, no? Yeah. So whenever there is a change of character, you will be able to map the supply converted into demand or demand converted into supply. If you notice, in this case, the market was in bearish movement. Each and every time there was a proper break of structure, break of structure. But at this point of action, there was a change in character on the break of this point, right? So whenever we look into that perspectives, the market will tend to act in perspective of conversion, which will be supply converted into demand. Same scenario, if we take the case of remapping structures in the movement towards the short, what do we notice? Market was in break of structure 1, break of structure 2, target completed. Once the target was completed, we had a change of character in the break of this. So what will be the mapping that we'll be looking for? This will be the mapping which we'll be following. So in this mapping, if you notice, market exactly took the rejection from the same point. One. First allocation is always from the body, right? So this is the allocation point of the conversion. Will you give any discount on books in Diwali? You can take the discount right now. Just contact the team in Telegram. You will get the discount, Ash. Okay. The discount is only for the subscribers. As you're a subscriber, you will get.
How is liquidity calibration done and how do you select calibration points? Step by step, Eric. Okay. MTSL start कर दो सभी लोग MNP LTD members. Take home should be 80 pips. Running at 130. नहीं मेरे को और एक add on point चाहिए यार. The quantity is very less that I am sitting with. 350 lot. 800 प्लस जाना है उसके लिए हमें रिट्रेसमेंट चाहिए. नहीं अगस्त्या मैं इधर नहीं लेने वाला कुछ भी कर लो. कल का ट्रेड भी मस्त था. Hope everyone followed the same rule and executed the trades. Right? Where was the execution point? यहाँ पे ये वाला ट्रेड. दो कैंडल मूवमेंट हुई थी. We waited for an intact हुआ execution. So always remember that is how you look for a right point of interest and right allocation so that market will always give you a substantial movement in the directions. So wait. Whenever you wait, you get the right amount and right movement plan of action to execute. What is an intact zone and how do you spot it? Intact zones are always identified wherever the candles has not been formed and interacted with candle A and candle C, and there is a gap created between the A and C candle. Never look for a comprehensive move or an allocation of intacts because if you notice, this is also an intact zone, right? This is also an intact zone, and this is also an intact zone. The intact zones are identified and executed at that point is only where you find a supply completion or a demand completion, let it be of 100% supply, 150% of supply, 200% of supply, or 150% of minimality or 200% of minimality. That is the range of motions that you will be looking for and execution with that perspective. Okay, Eric.
गुड मॉर्निंग हेमंत। वो ट्रेड अभी तक होल्ड कर रहा है तू? अच्छा है। सिस्टम ट्रेलिंग थोड़ा ऊपर कर लो। नहीं, और थोड़ा ऊपर। या परफेक्ट। जय श्री कृष्णा, आज लेट हो गया। नो वरीज रमेश। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा आपको भी। Why are you mapping multiple? I'm not mapping multiple. I'm just waiting कि where is the rejection. शॉर्ट की तरफ भी देख रहे हो? नहीं देख रहा हूँ मैं शॉर्ट की तरफ तभी देखूंगा जब सेटअप फॉर्म होगा। Just for in case if the market takes a rejection and doesn't take a rejection back from the intact level, what will be the plan of action that you will be following? No, I'll be not following any plan of action. If the intact level is not respected, I will wait for the next setup to form from the next intact level of the direction. So with that, I'll look for an execution. ठीक है? रिटेलर्स को जब तक ट्रैप नहीं करेगा मार्केट, रिटेलर्स का लिक्विडिटी हंट जब तक नहीं होगी, तब तक एड ऑन नहीं देखोगे हर्षित। व्हाट आर यू डूइंग? यू डूइंग इट रॉन्ग। दो कैंडल हो गया।
दे दो यार. इट्स लाइक आज मैं अपन का बात नहीं मानेगा. क्यों नहीं मानेगा? मानना ही पड़ेगा. Sir, let's do one more challenge. It's been long time. This time we'll do it with $20. Okay, करो ना. Problem नहीं है. Yeah, let's do that challenge. $20 challenge. Starting from today, हाँ? London session से start कर. नहीं, मेन अकाउंट का ट्रेड वो चलता रहेगा साइड में. माइंडसेट चेक करने के लिए होगी वो उतना ही. कि आर यू still the same person who is able to do it or not? लंदन सेशन के अंदर $20 से विल कन्वर्ट इट इनटू 250 300. उसके बाद तो फुल रेंज ऑफ मोशन हमारे साथ ही है. सो नॉट एन इशू. स्ट्रीमिंग विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स. जो भी डाउट्स है पूछ लो प्लीज. हाउ मेनी ट्रेड्स विल बी द प्लान ऑफ एक्शन फॉर $300? 2 ट्रेड्स. ज्यादा नहीं है. सभी लोगों को ग्रुप में एक मैसेज भेजा है. प्लीज फॉलो दैट. MNP LTD. Your view on Nifty today. लेवल्स मैप किया था ना. यार दशरा होने तक मत करो यार प्लीज. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कल का क्लोजिंग यहाँ से हुआ था 200% ब्रेक एंड कंटिन्यू थी. तो मैपिंग विल बी इन पर्सपेक्टिव ऑफ द सप्लाई. ये सरप्लस है. सॉरी, ये वाला नहीं, वो नीचे वाला. 1 2 3 4. इसके साथ TTS आप अप्लाई कर लेना. ठीक है. 5 week range. 1 2.
At the current stardom, there is no trade of executions, Ranjit. Okay. So if there is a formation of a proper three wing, next candle rejection and continue, then only we will look for the new mapping, not prior to that. Clear? One hour is still bearish. There is no confirmations towards the long. So this is the point of interest, what you will be able to identify at the current state. सर यहाँ त्रिशूल भी फॉर्म नहीं हुआ है, वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लॉन्ग की ट्रेड क्यों प्लान कर रहे हैं? प्लीज बताइए, बता, ये थोड़ा लेट हूँ, समझ नहीं आ। लॉन्ग का प्लान हम पहले से ही कर रहे हैं। ग्रुप में एक मैसेज आया था सबको, टू एग्जिट दिस ट्रेड इफ यू नोटिस थ्री विंग सेटअप हाई वॉल्यूम रेंज, राइट? उसके बाद से वी डोंट हैव ए नियरेस्ट हाई वॉल्यूम पॉइंट ऑफ एक्शन, राइट? हाई कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, so definitely we'll look for that, right? फाइनली ये कैंडल में आना चाहिए था, इधर आ रहा है। You understood why liquidities are very much important? Till the time high calibration isn't completed, will not look for a reversal trade of action. नहीं नहीं, वैशाली एंड श्रावणी दोनों गलत हो, यहाँ मैपिंग गलत है। हाँ, स्टेबलाइज होने दो ना मूवमेंट। हमेशा याद रखो, जब भी ऑयल में ट्रेड करते हो, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। What do you notice? Market is in a consolidation range. In that consolidation range, 1 hour का मैपिंग कैसे होगा? POI के बेसिस में होगा ना? Whichever side the market breaks, उसका opposite direction का movement होगी. So in this scenario, if I take this as an action plan, how will you map it? You will map it in the previous point of action. So यहाँ पे POI build हो रहा है, एक drop continuity till this, ना? So always look in that. Why do you go into a tangent move? हाँ, डेफिनेटली वो ड्रॉप होगी। पीओए का रूल फॉलो करो, पीओए वन एंड पीओए टू स्ट्रैटेजी। एंड आप बोल रहे हो रमेश वॉल्यूम स्पाइक नहीं है, इफ यू नोटिस वी हैव टुडेज वॉल्यूम स्पाइक आ गया। व्हाट इज दिस? आज का दिन का
हाँ बट एक रिजेक्शन के साथ ही देख, सिंपल रूल है, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रेक दैट। प्रॉपर सेटअप फॉर्म बोले दो, उस सेटअप के साथ थ्री विंग या S2B1 सेटअप फॉर्मेशन दिखने दो, उसके साथ ही, नथिंग प्रायर टू दैट। ओके, as per me analysis is better than assumptions। दूसरों का पता नहीं। क्या क्या सवाल पूछ रहे हो यार, ट्रेड नहीं मिल रहा है तो। वर्षा एक ट्रेड डिप्लॉय कर दो शॉर्ट के तरफ, so that let them also have a proper long trade। Someone is back in action, I was always in action, okay। नहीं, इनका जो क्वेश्चंस आ रहा है ना मजेदार आ रहा है। ट्रेड है यार, चिल मारो। Streaming will be there for next 15 minutes, whatever doubts you guys are having please do ask। आईडी में पंच करो वर्ष, स्विंग में क्यों डाल रहे हो। गुड मॉर्निंग गौड्रा, हाउ आर यू, हाउ वाज योर ट्रिप, कितना ट्रिप मारते हो सर आप।
अच्छा है. Okay, when did I say anything to you? I didn't say anything to you. और थोड़ा ऊपर कर दे लिमिट ऑर्डर को वर्षा. Yes, correct point. We don't look for drawbacks. सर एक मोटिवेशन कोट हो जाए. पावरफुल के ऊपर बोलना कुछ. A man with filled pockets, a man with the kind hearts, a man with a confident face, a man with a responsible soul is always powerful and mysterious. You can add one more thing, kindness in the heart. It doesn't mean that is only for man, it's for women as well. ये इंस्टेंट लिखना कहाँ से सीखे? पढ़ने से. Good morning, Veer. No worries. Good morning, Vishal. Hello, Nitesh. I explain your calculations easily. And live A to Z. Which one are you looking for, Vishal?
MC 1.0, that we use it only in quarter one and quarter two. And if you're talking about MC 2.0, always remember to calculate in perspective of personas, which is taken from the rejection point of reversal with high volumes, right? Wherever the high volume is formed and the setup is formed with that, you will mark the levels and the calculations from that point. At this current scenario, this is your swing low, this is your swing high, and this is your retracement point, right? So with that retracement point, you get the numbers of the calculated values. That calculated value target was at 58, which is this rejection. Same scenario if you look into the consideration, swing high, swing low, and retracement, because this is a green candle. So with that, this is the persona of exact rejection what you have at the current point. Yesterday जो आपने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस किया था वो सपोर्ट से ब्रेक हुई, देन हमें उसमें सरप्लस कितना लगाते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। 100%। मिनिमलिटी फॉर्म नहीं हुआ है तो 100% ही होगा ना। Market took a rejection over here, right? With this rejection, what do? The movement action plan will be taken under the consideration of the first come first serve. So first come first serve mein, this is the plan of movement. Allocation from the top. What do we see? Minimality. Post minimality is pointed. The second allocation, day closure, right? So post the day closure is done, what is the next thing that you look for? Continuity in the moment. Market gap down open kiya tha. So on the break of minimality 200%, how do you mark? Where is the retracement? Retracement is at 200%. From the rejection point of retracement till the 200% will be your mapping. So this is your 100% mapping what you follow. Okay. With that 100% of surplus mapping, what is the next step that you look for? Retracement. One, two. Same with Nifty. This was the retracement and market is in the zone. Good morning, Zaid. What about a man with confidence voice? For you, sir, your confident voice explanation. If the man is filled with money in the pocket, Zaid, and with that you're having a kind heart, with that you're having the confidence in the face, and you have the responsibility in the soul, definitely the confidence in the voice will be at its peak, right, Zayaji? So because voice is only used where it's demanded, but money is used everywhere, knowledge is used everywhere, which is filled in your mind, and confidence in the face is the walk what you carry for yourself.
So that's aura for me. What's your next view in BNF? Your knowledge is work and market. Nice, brother. Thank you, Vishal. Thank you, everyone, for watching the stream. Keep learning and keep growing. You all are doing great. Only one purpose to be followed, guys. Let it be a man or a woman. Try to be better than yesterday. Don't try to be better than today. Okay? The only formula for life. And try to be as humble as possible so that no one comes to know what your actual plans are. सर एड ऑन देखे क्या नहीं यार नॉट येट रुक जाओ फैजा सर थोड़ा तो गवर्नमेंट करो नॉलेज का गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर है जो किसी को पता ही नहीं मेरे को गवर्नमेंट इस चीज पे है कि आई एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड उससे ज्यादा कुछ और नहीं हाउ टू डील विद द पास्ट वेरी सिंपल स्टॉप बीइंग अ पोटैटो काउच start working on your comeback hit gym if you don't have money go for a walk do yoga do surya namaskar start reading books if you don't have money to buy books start watching YouTube videos on TED Talks. If you don't have internet, start to learn from the nature. What will you learn from nature if you ask? How to be calm, how to be bright, and how to be settle in the night. Once you make yourself mentally, physically, emotionally strong, you can achieve whatever you want in this entire world. No one can stop you. Trust me on this. Always remember one thing, guys.
Life is too short to think about the past and regret in the present so that you can spoil your future. Rather than that, let the past go, be in the present, and gain the knowledge to secure your future. That will be the only thing I will say you. And all the new members into the streams, remember only one thing: whichever strategy, whichever formula, whichever concepts you're following, do 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 or 2 months of live analysis. With that live analysis, look for an execution with smaller capitals. With the smaller capitals, make sure to compound it, follow the proper risk to reward. With proper following risk to reward, make sure to build the capital and not break the capital. That can be done through only the mindset by not being FOMO nor being greed. This is Nitesh signing off. Happy weekend to you all guys. मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.